Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to my students. Straight away, we are going to our lecture. The topic of our lecture is pie charts and line graphs. The only two left in this chapter, and the book is this. It is the fourth chapter. We are discussing about is statistics now. So these are two very important charts which we are going to study today. The pie chart. When you listen or when you hear word pie, what does it mean? This pie. And when this pie occurs before you, it means that there is something we are going to discuss is in circular form, because when pi comes, you see that this is circumference of the circle and this is the area of the circle. Okay, now if we want to uh, know the area of a sector in a circle, area of a sector in the circle, we have to provide the sector. Now this is the sector, this is the angle of the sector, and you know there are 360 degree in the circle. Therefore the same formula will appear over here. Now this is the area of the sector. For example, this is a circle, very bad circle. This is the circle and this is your sector, and the angle is theta over here. Then theta upon 360 multiplied by the area of the circle. Now it is very simple. Now our pie chart has a formula which has been derived from this formula. In fact, here you see the angle is given, but now we have to find the angle. We have to find the angle for which we have to draw the sector. Now, for example, in an Olympics, different countries won different uh, gold medals. For example, USA won 35 gold medals, China won 40 gold medals, Russia won 26 gold medals, and what else? India 30 gold medals, Japan won some, let us say 25 gold medals, and similarly some other countries. Now I say other countries which on the whole won 10 gold medals. Okay, now the total count for these gold medals is total count. Total gold medals. Now how many are the gold medals? 166. Okay, now you see the total gold medals are 166. Now we have to manipulate each which will be shown in this circle. We'll manipulate 35 gold medals in this circle, 40 gold medals in this circle, 26, 30, 25 and other countries in this circle by virtue of a certain formula. Now what is the formula over here? Let me draw a circle over here, big circle. What I do here is,
since I know the total amount of the gold medals, now I have to find the angle which is theta. Which is theta over here. I have to find the angle. Now what I do here, I will form a formula that medals obtained divided by total number of medals. Okay, now this will be our angle. Now for the first, it will be 35 divided by multiplied by 360 also is there. Multiplied by 360 is also there. So 35 divided by total number is 166 multiplied by 360. Now you see for one whole question, this amount will remain the same. This amount will remain the same. For this, okay, this will remain the same. So what you do, you just find the answer for this. 360 divided by 166. 360 divided by 166. It is 2.16. Let us meet 2 point, that is for this it is 2.17. This is 2.17. Now you have to multiply this 2.17 for this question only. Mind it, for this question only, it has become 2.17. Now you will multiply 35 with 2.17. 2.17 multiplied by 35. Okay, it will become 75.9, or you can say 76 degree. For this it has come 76 degree. There is always permission of error of plus minus 1 degree in geometry. So in fact it has come 75.9. So we are well within range. So it has become 76 degree. 40. Now multiply this 40 with 2.17. 40 multiplied by 2.17, it will become 86.8 degree, or you can say that 87 degree. It has become 87 degree. For this, 26 multiplied by 2.17, it will become 56 degree. For India, 30 multiplied by 2.17, it will become 65 degree. For Japan, 25 multiplied by 2.17, it will become 54 degree. And for other countries, simply it will become 22 degree. Now, if you add these degrees, all these degrees, what should it come? Let me calculate it. 76 plus 87 plus 56 plus 65 plus 54 plus 22 is equal to. See, it has become 360 degree. So it has become 360 degree. Despite the fact that I have rounded these figures, even then it has become 360 degree. So now let me manipulate
these degrees in this circle. Now here it was the center, somewhere here. Yes. Okay. Now this is the center. Now I will draw 76 degree. Where is my protector? This is my protector. Okay, now I have already marked because this is opaque. Now this is my 90 degree and this is my 0 degree. Now this is my 0, this is 90 degree, and I have to make 76 degree out of it. Now 76 degree, 76 degree, 70, 75 and 76. With the pointed pencil, just do it in this way. This is your the 76 degree and this is your baseline. Now this is 76 degree. Now I'm not going to write the 76 degrees over here. I will write 35 gold medals. Okay, you can also color it. You can also color it. Now for the second, which is China and US won 40 gold medals, I have to draw 87 degree angle. Now what I will do from head to tail arrangement. Now from tail, now since this is the tail of this angle, this is the tail of this angle, I will consider it as head of the next angle and I'll start the next angle from this line. Now this is the baseline for the next angle. Now how much angle is this? This is 87 degree. This is 87 degree. Now 87 degree will come 80 degree and 87 degree will come over here. Now how many are 40? Okay. Let me draw all the angles first. Russia 56 degrees. Similarly, now this is the base angle. This is the tail of this second angle and the start and the head of the third angle. And third angle is 56 degree now. Third angle is 56 degree. 55 and 56 degree. Okay. 56. Next is 65. Similarly, 65. Next is 54. 50 and 54. And the last is 22 degree and it should become 22 degree from here with the error of 1 plus minus 1 degree. So it is almost 21 degree. Okay, it is not very bad. 65, 54 and 22 degree. Now my dear students, you can also color them by different colors. Since I have only three colors, okay, now this is green, this is red, okay, and this is uh, let me say black color, and this is some this and some this, okay, and this is some this and some this,
Now you see, we have created a pie chart. Now I can easily uh, read what is written over here in data form, and now this is in graphical form. In data form and in graphical form, 35 gold medals has won. USA has won 35 gold medals, and other countries has won 10. So this is how we create and how we draw the pie charts. Now we'll come to the exercise straight away to the जी बच्चों, मैं ये बता रहा था उर्दू के लिए कि हमें पाई डायग्राम बनाना होता है। जब तो पाई डायग्राम बनता है, अब जब भी पाई का जिक्र आता है हम क्या कहते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी सर्कल से नबर्रद आजमा है। तो ये देखिए कि ये है एरिया ऑफ द सर्कल और ये एरिया ऑफ द सेक्टर जो कि ये बना हुआ है, और ये थीटा एंगल है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, और ये टोटल एंगल बनते हैं 360। जब हम इसको इस तरह डिवाइड करते हैं तो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर मिल जाता है। तो एक मिसाल मैंने अपने इंग्लिश वाले बच्चों को समझाई है, वही मिसाल आपको समझा देता हूँ। यूएसए के हम एक मैचेस के अंदर या ओलंपिक्स के अंदर मैचेस जो गोल्ड मेडल हैं वो डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट जो है वो गोल्ड मेडल्स जीते हैं। यूएसए ने, चाइना ने, रशिया ने, इंडिया ने, जापान ने और बाकी तमाम कंट्रीज ने। तो 35 गोल्ड मेडल, चाइना ने 40, रशिया ने 26, इंडिया ने 30, जापान ने 25 और अदर कंट्रीज ने 10। तो ये टोटल तादाद हो गई 166। अब क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, लेकिन जरा दूसरे अंदाज के अंदर। अब हमारे पास ये एंगल मालूम करना है और बाकी का सारा मटेरियल हमारे पास है। मेडल्स ऑब्टेन्ड, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। अब हमने क्या करना है, जो मेडल्स हमें मिले हैं, जो जीते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेडल्स मल्टीप्लाइड बाय 360, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकल आएगा हमारे पास। ये एरिया ऑफ द सेक्टर निकलेगा। मेडल्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ मेडल मल्टीप्लाइड बाय 360। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो मेडल्स हैं या टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो है, आप इस तरह भी कह सकते हैं जैसे कि कोई इम्तिहान हो उसमें टोटल नंबर होते हैं, उससे मज़ामीन हो। तो ये 166 है। 166 मेडल टोटल हुए, उनमें से 35 गोल्ड मेडल यूएसए ने, 40 चाइना ने, इस तरह करके लिए हैं। तो अब हमने हर एक की एक डिग्री निकाल लेनी है। तो जब एक क्वेश्चन के लिए मैं ये बताया था खास तौर पर कि सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए ये चीज जो है ये हमेशा एक ही रहेगी, यानी 360 डिवाइडेड बाय 166। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2.17। 2.17 आता है। तो 2.17 को हम अपने पास रखेंगे संभाल कर। तो हम इस 35 को 2.17 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 76 आएगा। 40 को 2.17 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आएगा। 26 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसी तरह अदर कंट्रीज 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर प्लस माइनस 1 डिग्री का एरर की गुंजाइश होती है, परमिशन होती है प्लस माइनस 1 डिग्री की। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, पॉइंट्स में नहीं लेंगे, क्योंकि पॉइंट्स में बनाना इंडीज के लिए जरा मुश्किल होता है। तो 76 आपने देखे कि सारे राउंड फिगर में आए, हालांकि ये पॉइंट्स में आए हुए थे, तमाम पॉइंट्स में आए थे, लेकिन मैंने इनको राउंड कर दिया। राउंड करने की आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरह राउंड करते हैं। तो ये 76, 87, और जब हमने इनको, हालांकि ये मैंने राउंड किए थे अच्छे खासे राउंड किए थे, फिर भी जब मैंने इनको काउंट किया है तो 360 डिग्री इसका आंसर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा बिल्कुल ठीक क्वेश्चन चल रहा है। तो अब हम एक डी की मदद से, जैसा कि आपने देख लिया होगा लेक्चर के शुरू के अंदर, कि हम इस तरह करके लाइन लगाएंगे और 76 डिग्री लगाएंगे। अब 76 डिग्री जब हम लगा चुकेंगे, उसके बाद यहां से शुरू करेंगे और अगली डिग्री हम लगाएंगे 87 डिग्री, जो कि हमारा एंड पॉइंट है। हमारे अगले एंगल के लिए वो स्टार्ट पॉइंट होगा।
इसी तरह इस एंगल जब ये हम निकालेंगे 87 डिग्री, अब यहाँ पर रखकर हम 87 डिग्री लगा लेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपनी डी और 87 डिग्री यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम 87 डिग्री लगा लेंगे, हमें 56 लगाना है। तो अब हमारा जो इसका एंड पॉइंट है उससे शुरू करना है, यहाँ पर हमने लगाना है 56 डिग्री, इसी तरह 65, 54 और बाकी जो हमारे पास ऑटोमेटिक बच जाएगा, ये 22 डिग्री ऑटोमेटिक बचा है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसको मैं मिटाता हूँ, फ्रेश बोर्ड पर हम लिखते हैं 4.9 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आइए जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.9। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द टेबल शो द रिजल्ट ऑफ सर्वे कैरिड आउट ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस टू फाइंड आउट अबाउट द यूज ऑफ ऑनलाइन स्पोर्ट सर्विसेज अमंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्पोर्ट्स सर्विसेज अमंग द स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड की हुई है, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। नेवर यूज्ड ऑनलाइन स्पोर्ट, तो यहाँ पर कैटेगरी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मैं स्मॉल थोड़ा सा लिखता हूँ क्वेश्चन, बाकी का आप वहां से खुद देख लीजिएगा। 4.9 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कैटेगरी बताई हुई है, कैटेगरी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दरअसल मुझे यहाँ पर तस्वीर भी बनानी होगी, इस वजह से मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखता हूँ। नेवर यूज्ड ऑनलाइन स्पोर्ट, नेवर। अब नेवर यूज्ड ऑनलाइन स्पोर्ट्स, ऑनलाइन स्पोर्ट, तो 180 स्टूडेंट्स हैं ये, और जिन्होंने यूज ऑनलाइन स्पोर्ट्स इन द पास्ट, पास्ट में जिन्होंने यूज की है ऑनलाइन स्पोर्ट, ऑनलाइन स्पोर्ट मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा सा। ऑनलाइन स्पोर्ट वो है नाम 120, और उसके बाद यूज ऑनलाइन स्पोर्ट प्रेजेंटली, प्रेजेंटली। So my dear students, this question number 1 in 4.9 exercise, and that is that there are students which have never used online sport for their studies. They have never used. The number of the students is 180, and the number of the students which had used in past online sports is 120, and presently the students which are using the online sport is 100 only. So we have to, what we have to draw a pie chart to illustrate this data. Now this is the simplest form of the question which was given to you. Now it is very simple, you just add the total. Now what is the total here is 0, luckily it is again 0, and it is 400. So it has become 400 students. Now what I told you, that we'll manipulate this 400 and we'll use the, now these are the number of students, number of each category, number of category, let me say it like this, number of category divided by total number of students, total number of students multiplied by 360. Now you see this and this will remain the same in this question. बच्चों हमने ये टोटल मालूम कर लिया, अब यहाँ पर जब हम 400 लगाएंगे और ये 360, तो ये रहेगा ही यहाँ पर, ये 360 कभी भी नहीं यहाँ से हटेगा। तो ये जो चीजें हैं ये दोनों एक जैसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फिलहाल, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कैटेगरी divided by, now this is 400 and this is 360. Now these two figures will remain the same. These two figures will remain the same in this particular question. So what will be this? 360 divided by 400. Now it will become 0.9. Now this will become 0.9. Okay. Now I will multiply this 0.9 with 180, 0.9 with 120, 0.9 with 100. So it will become 0.9
multiplied by 180, 162, it will become 162 degree. For 120, 120 multiplied by 0.9, 108, and for 100, obvious, it is very obvious, it will become 90. So if you add these, it should become 360. 0, 6, and 360. Now you see that it has become 360. So it is a simple check while going towards the pie chart. Now let me draw a circle out of it. Now dear students, I have drawn a circle. एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, फिर हम ये वाले एंगल्स इसके अंदर बना, then I'll draw these angles from here, from any point from the center of the circle. Now this is your starting point. Okay, now first we have to draw 162 degree angle over here. 162 degree. Now it will become over here 160 and 162. Now this will be the our angle for first candle. 162 degree for 180 students. Now this is 180 students. Second one is 108 degree. We'll start it from here. 100, 95, 100, and 105, 6, 7, 8. Okay. 108, and this must be almost 90 degree. The remaining must be almost 90 degree. Yes, it is 90 degree. You see that this is 90 degree. The left over. So my dear students, it is 108 degree, and this is these are 120 students. 120 and 100 students over here. Now these students never used used in past and presently they are using. तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह हमने ये पाई चार्ट, अब वी कैन कलर इज आल्सो, इसको हम कलर भी कर सकते हैं, आप इसको कलर भी कर सकते हैं, कि कलर करना चाहिए, ठीक है, ये कलर कर दिया, ये कलर कर दिया, तो ये कलर कर दिया. Well students, now we have drawn a pie chart showing that the students which have never used online sport are this much, used online sport in past are this much, and are presently using the online sport is this one. So this is our question and it has been done.